Hello everyone, how are you? So in today class we discuss important questions and PYQ of 3D. Okay, 3D chapter in this session. So our first question is find the direction cosines passing through 2 points -2, 4, -5 and 1, 2, 3. Okay, so we know that answer. So we know that if there are 2 points, this come in 2 to 3 marks, 2 to 3 marks question. Okay, ये 2 से 3 नंबर में आता है क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. So if there are 2 points P, x1, y1, z1 और Q, x2, y2, z2, इस केस में जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है ना ऑफ अ लाइन, passing through PQ, उसका रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय x2 minus x1, x2 minus x1 by PQ, y2 minus y1, y2 minus y1 by PQ, z2 minus z1 अपॉन PQ. ओके, अब PQ क्या होता है? PQ इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. इस केस में हम p को अज्यूम करेंगे -x1. हमारे क्वेश्चन में p की जगह हम अज्यूम करेंगे -2, 4, -5 और q को अज्यूम करेंगे q, x2, y2, z2 as 1, 2, 3. ठीक है, और डन. इस केस में हमारा PQ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? अंडर रूट 1 माइनस -2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस -5 होल स्क्वायर. डन. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 64. क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो कि अंडर रूट 7. तो PQ क्या आ गया हमारा? अंडर रूट 77. PQ गॉट द वैल्यू. फिर हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, देन डायरेक्शन कोसाइन then the direction cosine that is required one.
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। PQ हमने निकाल लिया है, x2 माइनस x1 क्या है हमारा, 3 है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 1 माइनस माइनस 2, 3, y2 क्या है, y2 माइनस y1 क्या है, -2, और z2 माइनस z1 क्या है हमारा, 8 है। Therefore, required direction cosine of a line joining through PQ is 3 under root 77 minus 2 under root 77 8 upon under root 77. Okay, and this is our required solution or answer. Now take pause of 1 minute and try to see what we have done in this question. Then we move toward next question. Okay, any doubt in this question? And it is very clear what we have done in this question. We first assumed P and Q in this form and started solving as per the requirement of the question and applying the required formula. Got it? Okay, now we are moving to next question. Question number 2. So that points this is collinear. What are our points? A 2 3 minus 4, B 1 minus 2 3, C 3 8 minus 11, and we have to show that these points are collinear. So start कर रहे हैं solution answer. So we have, so let A x1 y1 z1 as 2, 3, minus 4, B x2 y2 z2 as 1, minus 2, 3, C 3, 8, minus 11. ठीक है? And we know that what we know, direction ratio of a line of a line
passing through x1 y1 z1, which is A, and B x2 y2 z2 is what? It is x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. Okay, or this can be also written as x1 minus x2 y1 minus y2 and z1 minus z2. Done. So in this case, so direction ratio of our points, our given points x1 y1 z1 bx2 y2 z2 is what? According to formula, it is 1 minus 2 minus 2 minus 3 3 plus 4. So what are you doing? Minusing, you're subtracting 2 from 1 or 3 from minus 2 and minus 4 from 3, which is minus 1 plus 5 comma 7. Okay, similarly we should also rename this equation as C of x3 y3 z. Okay, similarly the direction ratio of point B x2 y2 z2 and C x3 y3 z3 तो हम कैसे लिख सकते हैं? It is 3 minus 1 8 plus 2 minus 11 minus 3, है ना? 3 में से क्या माइनस कर रहे हैं? 1, 8 में से माइनस कर रहे हैं 2, जो कि प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 11 में से माइनस 3, तो हमें क्या मिलेगा? 2 10 minus 14. ठीक है? बट हम कुछ चीज़ यहाँ से नोट कर पा रहे हैं इन दोनों चीज़ों से। यहाँ से हम क्या नोट कर पा रहे हैं? एनीथिंग? एनीवन कैन गेस कि हम यहाँ पे क्या नोट कर पा रहे हैं? कैन एनीवन गेस व्हाट वी आर एबल टू नोट डाउन फ्रॉम हियर? कॉमन चीज़ है कुछ? कॉमन है। Suppose this is 1, suppose this is 2. So it is clearly visible. 1 is multiple of 2, है ना? जो 1 है मल्टीपल ऑफ 2, अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें तो हमारे ये सिमिलर आ जाएगा। So what can we conclude? We conclude line AB and BC are parallel to each other. Okay,
पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। बट अगेन एक सेकेंड, हमने पिछली स्लाइड में देखा था क्या, हमारा लाइंस ए बी बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। एंड वी ऑल्सो नोटेड B is common in point B. This point B is common in both AB and BC, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, इससे हमें कंक्लूड ये होगा, सो वी कैन से दैट point A, B and C are collinear. Is it collinear points? Done. Any doubt? And this can be asked in 4 marks. This can be asked in 4 marks. This can be asked in 4 marks. 4 marks, okay? 4 marks. Try to analyze कि हमने क्या किया अभी तक. Then we again move to next question. Just try to analyze what we have done till now. Then we move to next question. Take a 1-2 minute and try to analyze. Then we will take next question. Here also. Okay. Out. So in this question actually we used the concept of direction ratio, okay, to prove this point A, B, C are collinear to each other. This is the simple thing that you have done in this question. Okay. Now let's move to next question. Question number 3 क्या कह रहा है? If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y, z axis respectively, then find its direction cosines. कोई guess कर सकता है इसको हम कैसे करेंगे? Any idea? Can you guess? इसको हम कैसे करेंगे? Any idea? So we assume let
if line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with x y z axis, find डायरेक्शन कोसाइंस. हम अज्यूम कर लेंगे लेट द डायरेक्शन कोसाइंस of a line be L, M, N. Okay. Now if we take L, assume L equal to cos 90 degree. And what is the cos 90 degree? Can anyone tell me? It is 0. M cos 135 degree. What is this? Its value is minus 1 under root 2. Okay. What is N? N is cos 45 degree. And what is its value? 1 upon under root 2. Okay. Why we are doing this in such a way? This again two marker question. Okay. Why we are doing like this? हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? गैस कर सकता है कोई? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं इन द फॉर्म L cos अल्फा, M cos बीटा, N cos गामा. और जो अल्फा बीटा होता है ना ये एंगल होता है. दिस इज द एंगल with respect to x-axis. Angle. This is the angle with respect to y-axis. And this is the angle with respect to z-axis. ठीक है? Got it? Any doubt? और इस केस में हमारा अल्फा क्या है? इस केस में हमारा अल्फा है 90 डिग्री, बीटा क्या है 135 डिग्री, गामा क्या है cos 45 डिग्री. ठीक? कोई डाउट? So can we say the value of L which is 0, M which is minus 1 under root 2 and N which is 1 by under root 2 are the required direction cosines? Required direction cosine of the required line. ऐसा बोल सकते हैं हम the required line, है ना? So 0, minus 1 under root 2, 1 under root 2 is the required direction cosine. Okay, and this is our final solution, final answer. Okay, then this can be asked in 3 marks question. This is 3 marker question, 2 to 3 marker question. This can be come in 3 marks. These all are the PYQ asked in the various exams like CBSE and JEE. Now try to analyze what we have done till now. Then we move to next question. Question number 4. We move in question number 4 then. Then we move to next question. Take a 1 minute time, 2 minute time, and then we move to next question.
Try to analyze how we have done this question. Then we move to next question. Okay. So can we proceed to the next question? So next question is question number 4. To find the angle between the pair of lines given by x plus 3 upon 3, y minus y upon 5, z plus 3 upon 4, x plus 1 by 1, y minus 4 by 1, z minus 5 by 2. In this question, can anyone guess how we do this question? This is question number 4. This is question number 4, okay, not 5. Okay, so we are given lines x plus 3 by 3 answer, by 3, y minus y by 5, z plus 3 by 4, x plus 1 by 1, y minus 5 minus 4 by 1, z minus 5 by 2. Okay, and we know that that any equation, जिसको भी हम इस any equation that can be written in this form, y1 z minus z1 x minus x2 b1 x1 sir. Wait a minute, can we write like this, y minus y1 no yaar, wait, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, z माइनस z2 अपॉन b1 b2, जब भी हम कोई भी इक्वेशन जो हमारा इस फॉर्म में हो, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म. इन दिस केस डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो लाइन का ये होता है a1 a2 a3 फॉर लाइन 1. सिमिलरली, can you tell me what is the direction ratio of second line? It is b1 b2 and b3. ठीक, correct. So line है ना, b1 b2 b3, and our given line is x plus 3 equals to y minus 1 5 z plus 3 z plus 3 by 4, and another line is x plus 1 by 1 which is equals to minus y by 4 1, and this is z minus 5 by 2. इस केस में हमारा डायरेक्शन
रेशो क्या हो जाएगा? कैन वी राइट लाइक दिस? A1 is our 3, A2 is our 5, A3 is our 4 एंड सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? B1 1, B2 1, B3 2 लिख सकते हैं. कैन वी राइट लाइक दिस? एनी डाउट? और हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, बिटवीन दिस पेयर ऑफ लाइंस. और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी लाइन, अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं. इस फॉर्म में कैन एनीवन गेस? A1 B1, A2 B2, A3 B3, इस फॉर्म में हम लिखते हैं. ठीक है. एंड दिस बिकम्स अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, अंडर रूट B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर एंड B3 स्क्वायर. इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. बिकॉज वी नो दैट कोई भी अगर दो लाइन हमारा इस फॉर्म में है, x माइनस x1 A1, y माइनस y1 A2, z माइनस z1 A3, x माइनस x2 B1, y माइनस y2 B2, z माइनस z2 B3, तो उन दो के बीच का जो एंगल होता है वो इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक. नाउ जस्ट स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज of the required. Just start putting the values, given values. What we get? 3.1 into 1 plus 5 into 1. Can we write 5 into 1 plus 4 into 2? उसका अंडर रूट क्या लिख सकते हैं इसमें हम? लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 4. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 5 8 अंडर रूट 50 अंडर रूट 6. इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम? एनीवन? 16 अंडर रूट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और हमें पता है क्या? अंडर रूट 25 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, जिसको कि फर्दर हम लिख सकते हैं 16. 5 का क्या होता है वैल्यू? स्क्वायर रूट 5. 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? 2. और अंडर रूट 3 कॉमन तो है ही, जिसको हम लिख सकते हैं. इसको हम फर्दर कैसे लिखते हैं? 8/5 अंडर रूट 3. ठीक. विच इज आवर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. फिर हम रिक्वायर्ड एंगल क्या लिख सकते हैं? सिंस कॉस थीटा इज, क्या वैल्यू थी? 8/5 अंडर रूट 3. 8/5 अंडर रूट 3. वैल्यू ऑफ थीटा cos inverse 8/5 under root 3. And this is our required angle and final solution. And this is our required angle oblique final solution. ठीक.
Done. Find it out in this part. So again take 1 to 2 minutes and try to analyze what we have done till now. And this can be asked in 4 marks. This is 4 marker. Four marks. Can be asked in 4 marks. This is 4 marks. Now try to analyze. Then we move to next question. Okay. Try to analyze, then we move to next question. See, try to try to understand what we have done. कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकाल रहे हैं एंगल, ऑब्जर्व हो रहा है? कार्टेशियन में कैसे हम निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है? कार्टेशियन में हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर रहे हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3 टू गेट आवर सॉल्यूशन. ठीक है ना? ओके. ठीक है ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ आवर डे. What is the question? To find the equation of plane passing through 3 points 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1. Okay, this is the question. So can we proceed? Answer. We know that equation of any plane passing through points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is what? It is the determinant of x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1
z2 minus z1 upon x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 इक्वल टू 0. ठीक. नाउ वी अज्यूम हम अपने जो गिवन पॉइंट्स हैं, जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं उसको हम लेट कर लेंगे लाइक दिस. लेट x1 y1 z1 which is 1 1 0, x2 y2 z2 is 1 2 1 1 2 1 and x3 y3 z3 is minus 2 2 minus 1. ठीक. Now using this in our equation, what we get? So in the next step we write, what we write? x minus x1. x1 क्या है हमारा 1 है. y minus y1. y1 क्या है हमारा -1 है अगेन. और 0 z1 क्या है 0. So this is z minus 0. Again z. ठीक है. Now x2 minus x1. 1 minus 1 0. Okay. y2 minus y1. What is it? Is again 1. z2 minus z1. It is 1. z2 minus z1. z2 minus z1. And now x3 minus x1. It is minus 3. x3 minus x1. Okay. y3 minus y1. 2 minus 1 1. z3 minus z1 minus 1. Okay. Now we start solving a determinant. Okay. So we solve this determinant through row 1 r1. From here we solve. You can solve through anything. r2 also, through r3 also, c1 c2 c3. That is our choice. But here in this question we are moving through this minus 1 1 minus 1. This is y minus 1. Determinant of 0 minus 3 1 minus 1 z 0 1 minus 3 1. And this can be written as what? X minus 1 minus 2 minus y minus 1 z3. This is 3z which is 0. Okay. Now again moving to next slide. What can we write? This can be written as minus 2x plus 2. Write like this in next step. Minus 2x plus 2 and minus y plus 1. This is minus 3. This is 3. Here 3. Here lies 3. ठीक है. So in next step what can we write? Minus 3y plus 3. Minus 3y plus 3. Minus 3y plus 3. Plus 3z. Plus 3z. Now what we write here? Minus 2x minus 3y plus 3z is what? It is 5. Understood? Any doubt till here? This further can be written
plus minus 2x minus 3y plus 3z minus 5 equal to minus 5. Multiplying both the side by minus, negative sign, what we write? 2x 3y minus 3z 3z into 5. And this is our required, what required? क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स. Required equation of plane passing through given points. And this is our final solution. Okay. Any doubt till here? So एक बार आप क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हमने क्या किया, ठीक है. Then we move to next question. What we have done in this question. Try to visualize. Then we'll move to next question. We have just used, in this question we have just used the standard formula, है ना, to derive or to find the equation of plane passing through the points. Nothing more than this. Okay. Okay. Now shall we proceed to next question? Next question पे move करें. Shall we move to next question? Okay, let's move to next question. So question number 18. This can be asked in 6 marks. Okay. This was again 3 to 4 marks. ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा मैक्सिमम. 4 मार्क्स. अगला वाला क्वेश्चन है, ये 6 मार्क का है. 6 मार्क्स. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है. इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the R. Okay, foot of the R and the length of perpendicular drawn from point P to the line R vector minus I cap 3j cap 3k cap lambda times 2I cap 3j cap minus k cap, and also find the image of P in this line. Okay, this is part of answer. Sorry, just ignore this part. Okay. So answer start with doing the solution part. जब भी हमें इक्वेशन आर वेक्टर इस फॉर्म में जब होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस आई कैप 3j कैप k कैप लैम्डा टाइम दिस, उस वक्त जो हमारा जो कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट इन दिस केस ऑन द लाइन
r vector minus I cap 3 j cap k cap plus lambda times 2 I cap 3 j cap minus k cap। इस केस में कोई भी जो पॉइंट होता है ऑन द लाइन आर वेक्टर विच इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। सो वेट अ मिनट, कैन वी राइट लाइक दिस? कैप 2 lambda minus 1 j cap 3 lambda plus 3 and k cap minus lambda plus 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। therefore any point on 1 is nothing but 2 lambda minus 1 3 lambda plus 3 minus lambda plus 1. This is the point on the line 1 which is in parametric form. Okay, now हम assume कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है, assume our point is foot of perpendicular from point and this given point 5, 4, 2. ओके, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, so what is the equation of any line which is passing through this point? This can be written as two lambda minus 1 minus 5, which is minus 6 I cap 3 lambda plus 3 minus 4, which is 3 lambda minus 1 j cap minus lambda plus 1 minus 2, which is minus lambda minus 1 k cap, है ना? Okay, any doubt till here? Now this equation is perpendicular to r vector, so can we write like this? If any we know that if any vector x vector y vector are perpendicular in parametric form, then their dot product is always 0. We know that now, so we use similar thing here. So according to this 2 lambda minus 6 I cap 3 lambda minus 1 j cap plus minus lambda minus 1 k cap into 2 I cap 3 j cap minus k cap is 0. Got it? Now what can we write in the next step? We write 2 lambda minus 6 into 2 3 lambda minus 1 into 3
plus minus lambda minus 1 which is 0. Got it? So in next step what can we write? 4 lambda minus 12, 9 lambda minus 3 lambda plus lambda 1 equal to 0. Okay, and then we got what? 14 lambda minus 14 is equals to 0. And what is the value of lambda? It is value of lambda equals to 1. Okay, now move to next slide. Okay. Now assume there is point P 5, 4, 2, and this is line, and there is another point P dash x, y, z. Okay. So after putting the value, there goes. After putting the value in this point, what we get? We get the coordinates. We get the coordinates of point, which is 960. Okay. So the length of perpendicular. Therefore, length of perpendicular perpendicular through point 542 and 1, 6, 0 is under root 5 minus 1 का whole square, 5 minus 1 whole square, 4 minus 6 whole square, 2 minus 0 whole square. Okay, and in this case what we get, in next step what we get, this is equals to under root 16 4 plus 4, which is under root 24. So this is the length of perpendicular passing through point 4, 5, 4, 2, 1, 6, 0. Okay. Now this is line, and this is P, and this is P dash is it is reflection point. So can we say the foot of perpendicular? The foot of perpendicular will be midpoint of line PP dash. Any issue till here? Okay. Now what we write? We have the equation of line. We can write 5a cap, 4j cap, 2k cap. This line is perpendicular to this. So dot product of this and this is what? Xi cap, yj cap, zj cap. Okay. And this is nothing but 2 times I cap plus 6 times j cap. We are just writing this equation in the parametric form and equating. Okay. So this is 5x, 4y, sorry, this is the plus. This is the plus sign. Okay. So this can be written as, wait a minute,
let me erase. So can we write like this? 5 plus x I cap 4 plus y j cap 2 plus z k cap 2 I cap j cap. Now just equate. So what we get? X is nothing but it is 2 minus 5. Y is 12 minus 4. Z is 0 minus 2. So what we get? We get x equals to minus 3. Y is 12 minus 4, 8. And Z is minus 2. Therefore, the required image of point P is what? Minus 3, 8, minus 2, which is our required solution. Okay, any doubt till this point? Try to visualize the question. Any doubt till this point? We started from here and we reached by assuming any point like this, and then this is put up perpendicular 5, 4, 2, then just solving the required format using dot products. This is dot product. है then solving we get alpha, we get the required coordinates and the length of perpendicular through this, we get this. Now the foot of perpendicular will be the midpoint of line PPV dash, and then using the equation and making the relation, then we get this, then solving, then we get xyz, and then we finally get the required image of point P. The required. So this is today's part, and in next session we see some more question related to either this topic or some other topic. Okay, so today's class is end here. Okay, thank you.